Hello everyone, welcome to Marvel 79 Plus series, reading filling the blank number 13, which means that we have already discussed 12 highly repetitive and predicted questions जो आपके real exam में आ सकते हैं, जिनकी probability बहुत high है and जो question हम आज discuss करने वाले हैं वो भी बहुत सारे students के paper में आए हुए हैं. So that's why I'm saying please pay attention to whatever is being taught because अगर आपको concept समझ आ गए बहुत easy हो जाएगा आपके लिए अपना paper crack करना और you can simply learn them, cram them so that आपको logics भी explain आए, you know that how to solve them and आपकी grammar के concepts भी improve हों. So that being said, let's get started. My name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now students ask क्या सर हम भी कर सकते हैं आपने कैसे किए? Then the answer is yes, you can also do because जो strategies मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप भी apply करोगे you can also score a perfect 90. And second thing, you have to practice with the software. Marvel PTE का software is powered by artificial intelligence, the same technology which Pearson uses, जो आपके final exam evaluate करने के लिए use करती है technology, we also use the same technology. And बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट अचीव होता है क्योंकि वो सही ढंग से प्रैक्टिस कर पाते हैं मावल पीटी के प्लेटफॉर्म पे. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द टॉपिक, अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू स्टूडेंट्स दिस वीक जिन्होंने अपना टारगेट स्कोर अचीव किया है. एंड लेट दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. that आपको ग्रामर की नॉलेज हो, that आपको ग्रामर की नॉलेज हो, that आपको ग्रामर की नॉलेज हो, that आपको ग्रामर की नॉलेज हो. सो पीटी रीडिंग इंटीग्रेटेड टाइमर होता है, 32 to 41 मिनट्स का होता है. यू नो दैट बाय नाउ क्योंकि हमारी जो स्पीकिंग है उसमें इंडिविजुअल टाइमर्स मिल जाते हैं, हमें राइटिंग में इंडिविजुअल टाइमर्स मिल जाते हैं, लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट में इंडिविजुअल टाइमर्स मिल जाते हैं, बट रीडिंग में सभी के सभी क्वेश्चंस का टाइमर इकट्ठा होता है. सो आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करनी होती है. अनदर मिथ और डाउट स्टूडेंट्स हैव इज दिस कि रीडिंग का स्कोर जो होता है, जो रीडिंग मॉड्यूल वो अटेम्प्ट करते हैं, that is of 90 marks. The answer is no. We are going to see that is of around 45 to 47 marks. And there are 5 question types in reading. And best part is this, पहले reading का order shuffled होता था, कुछ random आते थे questions का order, but अब order fix हो गया है. So सबसे पहले questions आपको हमेशा reading and writing filling the blanks आएंगे. Second will be multiple choice multiple answers. Third will be reorder paragraphs. Fourth will be reading filling the blanks. And fifth will be multiple choice single answers. So this is the order जो आपको एग्जाम में आएगा. एंड दिस इज द रियल स्कोरिंग कि पीटी में 90 मार्क्स आपके रीडिंग में कैसे आते हैं. इफ यू सी जो रीडिंग मॉड्यूल है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इतने मार्क्स का है. सो लेट्स डू द मैथ्स. 22 plus 3 25, 25 plus 6 31, 31 plus 15 46 and 1 47. इफ यू सी 47 मार्क्स का और अराउंड 50% मार्क्स की ही रीडिंग होती है. बाकी मार्क्स आपके स्पीकिंग से आते हैं, रीडिंग के, राइटिंग से मार्क्स आते हैं और लिसनिंग से मार्क्स आते हैं. रीड अलाउड्स कंट्रीब्यूट 22 marks to your reading. Summarize written text writing में जो होता है that contribute 10 marks. And then listening में highlight correct summary contributes 2 marks. And listening highlight incorrect words contribute approximately 9 marks. So this is how 90 of PT reading are scored. And one thing I want to tell you this, जो आप इसकी pronunciation है, हम इसको module नहीं कहते हैं. The pronunciation will be module, right? This is a pronunciation rule. जब भी du आता है इकट्ठा उसकी pronunciation j में. If you can understand written Hindi, it will be j या j में होती है. Another important concept for pronunciation. That's why जो students हमारे online coaching लेते हैं, and we have students from all over the world now. We have students from Australia, from New Zealand, UAE, India से तो बहुत सारे students हैं, but a few of students are from Nepal and Sri Lanka also. So इसीलिए आपको pronunciation lectures दिए जाते हैं क्योंकि हमारी pronunciation नहीं सही होती है. Those who are our elite members get grammar course, get pronunciation course. So those who sign up with us, who take coaching from us, उनकी हम grammar भी improve करवाते हैं, pronunciation भी improve करवाते हैं, because we want कि आपका 79 plus target first attempt में ही achieve हो when you have practiced with us. Now let's see, this is the reading filling the blank strategy. As I said कि आपको हर question का time अपने आप manage करना होता है. So with our artificial intelligence analysis plus big data analysis, we have found that you can spend approximately 2 to 2.5 minutes on each reading filling the blank. अब सबसे बड़ी mistake students क्या करते हैं, they try to read all words, they try to understand meanings of all words, and 2 to 2.5 minutes is not a sufficient time for doing that. And if you want to score 65 plus or 79 plus, this
is not going to help you at all, and you have to skim your content. This is the right strategy, and there are separate lectures for our students who take coaching from us for skimming. We help them to develop their skimming skills. So अब हमारी reading filling the blank strategy is divided into three things. One is context, second one is lexical resource or LEX, and the third one is grammar. So reading content को आप skimming भी कह सकते हैं. Then there is a forward reading, there is backward reading. All these concepts are explained in detail in our lectures. And then you have to understand the tone also. Tone is very important. Positive tone है, negative tone है, neutral tone है. We have solved previously reading filling the blanks on the basis of tones. Then collocations बहुत important है. Knowledge of collocations, phrasal verbs की knowledge होना बहुत important है. And vocab is something which you build slowly and steadily, but we are going to start providing our elite members course of collocations and phrasal verbs also. Grammar का course तो already हम अपने elite members को provide करते हैं. In grammar we cover tenses. There are approximately 25 to 28 lectures of grammar जिसमें हम tenses cover करते हैं, parts of speech cover करते हैं, parallelism cover करते हैं, active passive prepositions, modal, subject verb agreement. Because if you want to score 79 plus in reading, grammar is very important. And with our strategy, speaking easy हो गई है, listening easy है, writing तो बहुत easy है, but still you have to put some efforts in your reading. For that you have to make sure that आपको grammar की knowledge हो, lexical resource की knowledge हो. And our software provides you two modes. One is exam mode and second one is time mode. Exam mode जब आप on करते हो, जो questions बहुत ज़्यादा predicted होते हैं या repeated होते हैं, वो show होने शुरू हो जाते हैं. तो what you can do is you can simply cram those answers because paper में उनके आने की probability बहुत high होती है. And then second one is your time mode. जैसे ही आप time mode को on करते हो, आपकी time based practice शुरू हो जाती है. शुरू में you are not used to things, you are not comfortable with the PTE platform, so what you do is you practice without any time frame. Means आप एक reading filling the blank को 5 minutes भी ले सकते हो solve करने के लिए, but when you turn this mode on you will be only given to 2 to 2.5 minutes for solving reading filling the blanks, and then you get used to that time bound pressure कि आपको पेपर में भी उतने टाइम में ही सॉल्व करना है और आप प्रैक्टिस करते हुए भी उतने टाइम में ही सॉल्व कर रहे हो. सो यू गेट आइडिया ऑफ द थिंग्स कि कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो. एंड व्हाट हैपेंस जब टाइम रन आउट हो जाता है, देन द आंसर इज ऑटोमेटिकली सबमिटेड, जिसके कारण आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे थोड़ा फास्ट करना है. एंड दिस इज हाउ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर बिल्ट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग पीटी. Okay, so this is today's task and I'm giving you 30 seconds as usual. Skim through it and then we will discuss it. Okay, so time's up. The majority of early pictures in the National Portraits galleries something are by unknown artists with fundamental questions such as when, where and why they were painted still remaining to be answered. Okay, so अब आपको यहाँ पे ये फिलअप करना है और इसमें अब आपको ज़्यादा नहीं पता लग रहा, बट अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है you will be able to solve this. How? Because यहाँ पे apostrophe लगा हुआ है. apostrophe means कि ownership है, या ownership दिखा सकते हो, या फिर आप उसको अगर मैं हिंदी में बोलो तो हम का, के, की, राइट. जो मेजोरिटी ऑफ पिक्चर्स हैं नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी की या का. ओके, अब using process of elimination we are going to see how we can quickly eliminate the wrong options. And always remember PTE में RFIBs में आपको हमेशा +3 additional options मिलते हैं. So number of the blanks over here is 1 2 3 4, and let's count the number of options. 1 2 3 4 5 6 7. So you saw that आपके पास 7 options हैं and you are going to have 4 answers. तो I hope आपको ये +3 का logic clear हुआ होगा. And now let's see the correct fill up. So अब आप क्या करेंगे, process of elimination से यहाँ पे आप fill up करके देखेंगे और का, के, की लगाएंगे. Okay, so let's do it one by one. Information, gallery की information.
नहीं हो सकता। पोटेंशियल, गैलरी का पोटेंशियल नेशनल गैलरी के पोटेंशियल में है या इंफॉर्मेशन में है, आप बताइए, नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। ओके, क्या हम ये कहेंगे कि कॉम्बिनेशन में है नेशनल गैलरी की? सेम वे में प्रोस्पेक्ट भी नहीं हो सकता है, कनेक्शन भी नहीं हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी केयर। मेजोरिटी ऑफ अर्ली पिक्चर्स जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी की केयर में है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि उसके वहां हमने कुछ रखी हुई है, तो हम क्या कहते हैं? केयर में रखी हुई है। एक एग्जांपल दूंगा, हम कैसे कहते हैं केयर ऑफ। जब भी हम एड्रेसेस वगैरह लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं या किसी कंपनी में भेजना होता है, तो हम हमेशा साथ में क्या यूज करते हैं? केयर ऑफ एड्रेस में, राइट? शिपिंग लेबल में हम लिखते हैं उस पर्सन का नाम, केयर ऑफ दिस, कंपनी एड्रेस लिखते हैं। सो यहाँ पे हम का के की के साथ बता सकते हैं कि उसकी गैलरी की केयर में है, राइट? गैलरी के वर्क में या काम में नहीं हो सकती है, गैलरी के काम में नहीं हो सकती, गैलरी की केयर में ही होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस ओवर हियर एंड देन वी आर गोइंग टू मूव वन एंड वी हैव फिल्ड वन एंड लेट्स सी द सेकंड वन. Through the application of scientific methods, a new project has the something to unlock the evidence, okay, that will allow researchers to determine answers to these questions. So यहाँ पे अब हम किस चीज़ की बात करें? एक चीज़, इसको आंसर्स कहना है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करनी है, इसको क्वेश्चंस कहना है, एंड वी टीच अ डिटेल्ड प्रोनाउंसिएशन कोर्स टू आवर elite members, online members, and those who take coaching from us in our institute also. So इतना आपको पता होगा। अगर हम कोलोकेशन की बात करें, द प्रोजेक्ट हैज इंफॉर्मेशन टू अनलॉक द एविडेंस। क्या एविडेंस अनलॉक होता है इंफॉर्मेशन से? द आंसर इज नो। पोटेंशियल से यस। अगर आपको फ्रेजल वर्ब भी पता हो, पोटेंशियल की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? जनरली एबिलिटी। फ्यूचर में हमारे पास क्या आता है? फ्यूचर में हमारे पास एबिलिटी आती है अनलॉक करने की, ओके। बट यहाँ पे एबिलिटी वर्ड नहीं है, तो वहां पे क्या सिनोनिम यूज होगा? पोटेंशियल। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन टू अनलॉक नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्ट टू अनलॉक नहीं हो सकता। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो, कि हम एक एक ऑप्शन को फिल करके देख रहे हैं क्या वो सेंस बनाता है। अगर नहीं सेंस बनाता है, वी आर गोइंग टू remove it. Connection to unlock evidence nahi, work to unlock evidence nahi. So that's why we are going to fill potential over here. Moving to the next one, they will use something of cutting edge scientific techniques such as X-ray and infrared reflectography in order to reveal न्यू समथिंग अबाउट इंडिविजुअल पेंटिंग्स। अब यहाँ पे समथिंग कैसे यूज होगा? फॉरवर्ड रीडिंग से। जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे। फॉरवर्ड रीडिंग की क्या स्ट्रैटेजी से आपको पता चलता है यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एक से ज्यादा टेक्निक। सो एक से ज्यादा टेक्निक कौन सी होती है? इट विल बी कॉम्बिनेशन। आप ऐसे कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, क्योंकि आप यहाँ पे एक से ज्यादा टेक्निक को या दो टेक्निक्स को एंड के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉम्बिनेशन, ओके। एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। दे विल यूज अ इंफॉर्मेशन ऑफ कटिंग एज साइंटिफिक टेक्निक्स, नो। प्रोस्पेक्ट नहीं, कनेक्शन नहीं, वर्क नहीं। सो ओनली वन ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज कॉम्बिनेशन। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, न्यू समथिंग। हम नया क्या अनलॉक करते हैं? यस, टेल मी, हम नया क्या अनलॉक करते हैं? द आंसर इज इंफॉर्मेशन। हमें न्यू इंफॉर्मेशन अनलॉक होती है, ओके। सो इट विल बी टू रिवील न्यू इंफॉर्मेशन, राइट? हम न्यू इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं। रिवील इंफॉर्मेशन वैसे भी एक कॉलोकेशन है, ओके। रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल पेंटिंग्स, ओके। सो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं। दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ कॉलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग योर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक। प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते। प्रोस्पेक्ट तो एक तरह से चांस होता है, हम न्यू चांस थोड़ी रिवील करते हैं। हम न्यू कनेक्शंस भी नहीं रिवील करते हैं, हम न्यू वर्क भी नहीं रिवील करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी इफ इट्स करेक्ट. What we have done is we had drag and dropped information to here, and let's see if the answer is correct. Yes, the answer is correct, and we have written information also, explanation also. अगर आप देखेंगे care हमने करके देखा था, यहाँ पे हमने apostrophe से का के की से यूज किया था। गैलरी की केयर में होती हैं चीजें। सेकेंड, पोटेंशियल टू अनलॉक, राइट? पोटेंशियल हम अनलॉक करते हैं फ्यूचर में, एबिलिटी अनलॉक करते हैं। देखिए फ्यूचर इंडिकेटेड विल अलाउ, और कॉलोकेशन है टू के साथ इन्फिनेटिव की, राइट? अगर आपको ये ग्रामर कंसेप्ट नहीं भी पता, इट्स फाइन, बट व्हाट वी हैव डन इज फ्यूचर में हम एबिलिटीज को अनलॉक करते हैं, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। कॉम्बिनेशन, बिकॉज हम दो टेक्निक्स का एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन, कॉलोकेशन विद रिवील। आई जस्ट टोल्ड यू इंफॉर्मेशन
के साथ आपकी रिवील कोलोकेशन बनती है और साथ में आप न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, न्यू बातें फाइंड आउट करते हो. सो यू सी हाउ इजी थिंग्स कैन गेट इफ यू हैव नॉलेज ऑफ collocations, grammar, and solving reading, filling the blanks is easy. And that's why I tell you that these are very important to solve your reading to get your target score in reading. And we provide a very exhaustive course for grammar, for collocations to our elite members. And always remember we have 2 or 2.5 minutes. अब first 30 to 60 seconds में आपको क्या करना होता है, you have to skim the content. और उसके बाद जो टाइम है उसमें आपको clues ढूंढने हैं. जैसे हमने इसमें clues ढूंढे parts of speech के basis पे कि कहाँ पे verb fit होगी, कहाँ पे adjective fit होगा. Then आपको pointers और process of elimination. You have seen हम कैसे eliminate करते रहे कि यार अगर ये verb है नहीं है, ये adjective है नहीं है, उनके basis पे answers find out करना और easy हो जाता है. And always remember जितनी भी आपको मैं strategies बता रहा हूँ, those are validated and proven, right? We only teach validated and proven strategies. जैसे मैंने आज आपको ये parts of speech की strategy बताई, process of elimination की strategy बताई, या फिर speaking की strategies हैं हमारी, writing की strategies हैं, listening की strategies हैं. All the strategies are validated and proven. And consider Marvel PT as the center of PT universe. सबसे पहले आप concepts को understand करोगे. जैसे आज मैंने आपको कुछ concepts बताए, you have learned those concepts, then you on our software Marvel PTE के software पे you are going to implement them, and then you are going to perfect them. And with feedback which we provide feedback to your writing, to your listening, to your speaking, ताकि आपको पता चले आपको improvements कैसे करनी है. Then you are able to achieve your target score, and this is a trophy which you have to win. This is your target score which can be 79 plus, 65 plus or 58 plus. When you are not following or modifying our strategies, जैसे आज हमने कुछ strategies आपको बताई, but अगर आप उनको modify कर रहे हो, नहीं follow कर रहे हो, you will not be able to win this trophy in your first attempt. But if you are following those strategies, you will be able to win the trophy in first attempt. And learning a language is like going to gym. The brain needs exercise, and brain needs a repetitive exercise for it to डेवलप. एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. जैसे मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स आज बताए हैं, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है, समझना है, एंड उसके बाद आपको फीडबैक चाहिए होती है. एंड आवर सॉफ्टवेयर मार्वल पीटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फीडबैक टू यू. मी एंड माय टीम प्रोवाइड मैनुअल फीडबैक टू योर स्पीकिंग क्वेश्चंस, writing questions, listening questions. So that's why you improve and can achieve your target score. If you have any questions or doubt, you can WhatsApp us at 8699121121 for our online coachings also, or if you want to attend our coaching in institute. And do not forget to subscribe to our channel, because हम ऐसी informative videos, educational videos on a daily basis put up करते हैं, and so that you can get the notification first of all to improve your PT skills, English skills. We give wings to your dreams. ग्रामर की नॉलेज हो, आपको 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 ग्रामर